हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर में आपको कंपटीशन का पेपर पढ़ा रही हूँ। आप यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक, लेक्चर 2 तक पढ़ चुके हैं। आज यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस होगा। अभी पहले आपको पढ़ाने से पहले आपको सिलेबस यूनिट 2 का बता दें। कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992, Depository Act, the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया था, डिस्कस द कंपोजिशन, पावर, फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 रिगार्डिंग रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और आज यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3, लेक्चर 3 डिस्कस होगा। डिस्कस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज इन रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एज प्रोवाइडेड अंडर दैट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार लॉन्ग में क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग सन में क्वेश्चन लॉन्ग में आ चुका है। आइए क्वेश्चन को अब डिस्कस करें। This answer shall include following points: power of central government under SCRA, Security Contract Regulation Act 1956, power to call for periodical return, Section 6 and Rule 11, annual report to be furnished to central government SEBI by Stock Exchange, Section 7, power to direct rules to be made or to make rules, Section 8, power of central government to subgrade governing body of a recognized stock exchange, Section 11, power of SEBI under Security Contract Regulation Act 1956, power of SEBI to make or amend bylaws of recognized stock exchange, Section 10 and Rule 10 and 18, power of stock exchange to make bylaws, Section 9। तो अब एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न, सेक्शन 6 एंड रूल 11। सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 प्रोवाइड दैट एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू फर्निश टू द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी such periodical return relating to its affair as may be prescribed. Section 6 subclause 2 provide that every recognized stock exchange and every member thereof must maintain and preserve such book of account and other document as the central government after maintain and preserve such book of accounting and other documents as the central government after maintain and preserve such book of account and other document as the central government after maintain and preserve such book of account. The period of which book and documents must be preserved shall again be determined by the central government. This period will in no case exceed 5 years. The SEBI is empowered to inspect such book and document at all reasonable time. Section 6 subclause 3 provide that SEBI is also empowered if it is satisfied that it is in the interest of the trade of the or in the public interest to do so, call upon a recognized stock exchange or any member thereof to furnish in writing such information or explanation relating to the affair of the stock exchange or of the member in relation to the stock exchange as the SEBI may require. Appoint one or more person to make an inquiry in the prescribed manner in relation to the affair of the governing body of a stock exchange or the affair of any of the member of the stock exchange in relation to the stock exchange, and submit a report of such inquiry to the SEBI within such time as may be specified in the order, or in the case of any inquiry in relation to the affair of any of the member of a stock exchange, direct the governing body to make the inquiry and submit its report to the SEBI। देखिए, सबसे पहले चीज़ की पावर टू कॉल पीरियोडिकल रिटर्न जब आपको बोल रहा है, सेक्शन 6 रूल 11 कहता है कि हर सेबी जो है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है कि पीरियोडिकल रिटर्न रिलेटिंग टू अफेयर एज जैसा कि कहा गया उसी तरीके से किया जाएगा। वो क्या करेगा, हर रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज
और एवरी मेंबर क्या करेंगे, जो अकाउंट्स होंगे वहाँ के बुक होंगे उसको मेंटेन रखेंगे। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिमांड की जाएगी उन बुक को प्रेजेंट करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब के सब दिस पीरियड विल बी 5 साल तक मेंटेन रखे जाएंगे। 5 साल के बाद वो मेंटेन ना भी रखें तो भी, लेकिन रिकॉर्ड में कम से कम 5 साल तक उनके रिकॉर्ड में मेंटेन होने चाहिए। कॉल अपॉन ए रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और एनी मेंबर, जो भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होगा केवल वही उसी से काम किया जाएगा। सिक्योरिटी का काम वही खरीद और बेच सकता है। पॉइंट मोर ऑन मोर पर्सन टू मेक एन इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो सभी काम करेगा जो सेबी के द्वारा ऑथराइज होंगे और रिपोर्ट टाइम टू टाइम प्रेजेंट करेगा। अब सेक्शन 6 सब क्लॉज 4 प्रोवाइड दैट वेयर एन इंक्वायरी इन रिलेशन टू द अफेयर ऑफ ए रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज of the affair of any of its member in relation to the stock exchange has been undertaken. Every director, manager, secretary or other officer of such stockbroker, every member of such stock exchange, if the member of the stock exchange is a firm, every partner, manager, secretary or other officer of the firm, every other person or body of person who has been dealing in the course of the business with any of the person mentioned above in A, B, C, whether directly or indirectly, any of the person mentioned above in the A, B, C, whether directly or indirectly, shall be bound to produce before the authority making the inquiry all such book of account and other document in the custody or power relating to have it bearing on the subject matter of such inquiry, and also to furnish the authorities within such time as may be prescribed of him. भाई देखिए, चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का कोई सेक्रेटरी हो, चाहे फर्म हो, चाहे पार्टनर हो, सारे के सारे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन रखेंगे और जब भी मांगा जाएगा उस डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे। एनुअल रिपोर्ट टू बी फर्निश्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी बाय स्टॉक एक्सचेंज, वार्षिक रिपोर्ट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब सेबी क्या करेगी, जो स्टॉक एक्सचेंज होगा वो प्रेजेंट करेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 प्रोवाइड दैट एवरी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल फर्निश टू द सेबी विद ए कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो वो क्या करेगा, हर साल एनुअल रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट करेगा जैसा कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिया रहेगा। Power to direct rule to be made or to be make rules, section 8. Section 8 sub clause 1 provided that where after consultation with the governing bodies of a stock exchange generally or with the governing body of any stock exchange in particular, the SEBI is of opinion that it is necessary or expedient so to do so, it may be ordered in writing together with a statement of the reason. Therefore, direct recognized stock exchange generally or any recognized stock exchange in particular, as the case may be, to make any rule or to amend any rule already made in respect of all or any of the matter specified in subsection 2 of section 3 within a period of 2 months from the date of the order. Section 8 subclause 2 provided that if any recognized stock exchange fail or neglect to comply with any order made as above within the specified period, the SEBI may make the rules for or amend the rules made by the recognized stock exchange either in the form proposed in the order or with such modification thereof as may be agreed to between the stock exchange and the central government. Section 8 subclause 3 provide that where the rules are made of amend in pursuit of the central government directive, the rules so made or amend must be published in the Gazette of India and also in the official Gazette or Gazette of the state or in which the principal office or office of the recognized stock exchange or exchange is situated. On the publication of those rules in the Gazette of India, the rules so made or amended shall have effect as if they have been made or amended by the recognized stock exchange or stock exchange as the case may be. देखिए, पावर टू डायरेक्ट रूल टू बी मेड, रूल बनाने का डायरेक्टली अधिकार होगा और जो जिस तरीके से रूल बनाए जाएंगे वो 2 मंथ के अंदर सारे के सारे रूल्स वो पब्लिश होंगे ऑफिशियल गजट में। अगर कोई रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फेल होता है, स्पेसिफाइड टाइम में अपने रूल्स को अमेंड नहीं कर पाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कि बताती है, तो उसको उन रूल को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू
सुपरसीड गवर्निंग बॉडी ऑफ ए रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन 11। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, हमेशा सुपरसीड करेगी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। तो सेक्शन 11 प्रोवाइड दैट विदाउट prejudice to any other power vested in the central government under the act, where the SEBI is of opinion that the governing body of any recognized stock exchange should be supersede, then the SEBI may serve on the governing bodies a written notice that the SEBI is considering the supervision of the governing body for the reason specified therein. Then after giving an opportunity to the governing body to be heard in the matter, it may be notification in the official gazette declare the governing body of such stock exchange to be supersede. Further, it may appoint any person or person to exercise and perform all power and duties of any governing body. In case more than one person is appointed, it may appoint one of such person to be the chairman or another to be the vice chairman thereof. The SEBI may at any time before the determination of the period of office of any person or person appointed by it call upon the recognized stock exchange to reconstitute the governing body in accordance with its rules, and such reconstitution all the property of the recognized stock exchange which was wasted or in the possession of the person appointed by SEBI shall री-वेस्ट और वेस्ट एज द केस में भी द गवर्निंग बॉडी सो कॉन्स्टिट्यूट। तो क्या याद रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपरसीड करने की पावर है रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में सेक्शन 11। पावर टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कब स्टॉक एक्सचेंज को सस्पेंड कर दिया जाएगा, सेक्शन 12 में बता रहा है। सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट इफ द ओपिनियन of the SEBI an emergency has arisen and for the purpose of meeting the emergency the central government SEBI consider it expedient to do so, it may be notification in the official gazette for the reason to be set out there in direct a stock exchange to suspend its business for a specified period। कितने दिन के लिए बिजनेस को सस्पेंड किया जा रहा है ये भी ऑफिशियल गजट में बता दिया जाएगा। दिस पीरियड कैन नॉट एक्सीड 7 days, ये 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता सस्पेंड। However, if in the opinion of the SEBI the interest of the trade of the public interest required that the period should be extended, अगर लेकिन लगता है कि जनहित में 7 दिन से ज़्यादा सस्पेंड किया जाएगा तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है। इट मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एक्सटेंड द पीरियड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे बिजनेस को सस्पेंड किया जाएगा जितने दिनों के लिए वो ऑफिशियल गजट में वो चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी कि हाँ बिजनेस सस्पेंड किया गया है। Notification in the official gazette extend the period from time to time. Where the period of suspension is to be extended beyond the first period, no notification extending the period of suspension shall be issued unless the governing body or the recognized stock exchange has been given an opportunity of being heard in the matter. Power to prohibit character in certain cases, section 16. Section 16 subclause 1 provided that if the SEBI is of opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in specified securities, it may be by notification in the official gazette declare that no person in the state or area specified in the notification shall, except with the permission of the SEBI, enter into any contract for the sale or purchase of any security specified in the notification except to the extent and in the matter if any specified therein. Section 16 subclause 2 provided that all the contract entered into contravention of the above provision of subsection 1 enter into after the date of the notification issued under shall be illegal. प्रोटेक्शन ऑफ टेकन एक्शन इन गुड फेथ, गुड फेथ में कौन कौन से एक्शन लिए जाएंगे सेक्शन 29 बताता है ये। सेक्शन 29 प्रोवाइडेड दैट नो सूट prosecution or any other legal proceeding whatsoever shall lie in any court against the governing body or any member, official, bearer or servant of any recognized stock exchange or against any person or person appointed under section 1 of the section 11 for anything which is in good faith done or intend to be done in pursuance to the act of any rule or by laws made thereunder. Power of central government to grant immunity, section 23 the central government, if of the recommendation by the SEBI is satisfied that any person who is the alleged to be have violated any of the provision of the act of the rule of the regulation made there under has made a full and true disclosure in respect of
alleged violation, it may be granted to such person subject to such condition as it may think fit to impose immunity from prosecution for any offence under the act or the rule or the regulation made thereunder, or also from the imposition of any penalty under the act with respect to the alleged violation. The recommendation of SEBI in the regard shall, however, not be binding upon the central government. No such immunity shall be granted by the central government in case where the proceeding for the prosecution of any such offence has been instituted before the date of the received application for the grant of such immunities. तो ये आपको सेक्शन 23 में है. An immunity granted to a person at any time may be withdrawn by the central government if it is satisfied that such person in the course of the proceeding not complied with the condition on which the immunity was granted or had given false evidence, and thereupon such person may be tried for the offence with respect to which the immunity was granted, or for any other offence of which is appeared to have been guilty in connection with the contravention, and shall also become liable to the imposition of any penalty under Security Contract Regulation Act to which such person would have been liable had not such immunity been granted. Power to delegate, section 29 subclause A provide that the central government may be order published in the official gazette direct that the power except the power under section 30 exercised by it under any provision of this act shall in relation to such matter and subject to such condition if any as may be specified in the order be exercised also be in the Security and Security Exchange Board of India or the Reserve Bank of India constituted under section 3 of the RBI Act 1934. Power to make rule, section 30 सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाने की पावर देती है. द मैनर इन विच वी बी एप्लीकेशन में बी मेड द पर्टिकुलर विच दे शुड कंटेन एंड द लीवी ऑफ फीस इन सच ऑफ एप्लीकेशन. भाई फीस देंगे जो एप्लीकेशन में देंगे, साथ में जो फीस तय होगी. द मैटर इन विच एनी इंक्वायरी फॉर द पर्पज ऑफ रिकग्नाइजिंग एनी स्टॉक एक्सचेंज may be made, the condition which may be imposed for the grant of such recognition, including condition as to the admission of member if the stock exchange concerned is to be the only recognized stock exchange in the area and the form in which such recognition shall be granted. The particular which shall be contained in the periodical returns and annual report to be furnished to the central government. The document which we maintain and preserve under section 6 and the period for which they have should be preserved. The manner in which the bylaws to be made or amend under this act shall be before being so made or amendment by publishing or criticism. पावर ऑफ सेबी अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं वो भी आपको डिस्कस की जा रही हैं. तो आप देखेंगे कितनी सारी पावर्स इन्होंने दी हैं. तो एक एक करके सारी पावर्स को डिस्कस किया जाएगा कि जो इम्पॉर्टेंट पावर हैं पहले सारे सेक्शंस वाइज डिस्कस की जाएंगी, फिर आपको इसका एक लिस्ट दिया जाएगा. पावर ऑफ सेबी टू मेक और अमेंड बाय लॉज ऑफ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सेक्शन 10 एंड रूल 10 and 18. देखिए पावर ऑफ सेबी की क्या पावर रहेगी कि बाय लॉज जो रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बाय लॉज को अमेंड कर सकती है. अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 of section 10 of the Security Contract Regulation Act 1956, SEBI is authorized to make by law for all any of the matter specified in section 9 or amend any bylaws made by stock exchange. The aforesaid power shall be exercised by SEBI either on a request in writing received by from the governing body of a recognized stock exchange or its own motion. However, before issuing the necessary direction, SEBI shall satisfied itself after consulting the governing body of the stock exchange that it is necessary or expedient to do so, and also shall be record its reason for so doing. The bylaws to be made, amended or received shall be published for criticism in accordance with the provision of section 23 of the General Clause Act 1897, both in Gazette of India and official Gazette of the state in which the principal office of the recognized stock exchange. On publication of the said notification in the Gazette of India, the bylaws so make or amend shall have effect as they have been made or amended by the recognized stock exchange concerned. Subsection 2. If a stock exchange has any objection to any bylaws made or amended,
If any stock exchange has any objection to made any bylaws made or amended by SEBI, it may within 2 months of the publication apply to SEBI for revision. अगर किसी को कोई लगता है कि भाई सेबी ने सही नहीं किया तो वो 2 महीने के अंदर क्या कर सकती है, पब्लिश होने के अंदर रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दे सकती है. द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द बाय लॉज इन ए प्रीक्यूजिशन ऑफ बीइंग इफेक्टिव अनलेस सेबी इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट वेव्स द सेम. Issue of direction by SEBI section 12A provided if any inquiry SEBI is satisfied that is necessary in the interest of investor or orderly growth of security market to prevent the affair of any recognized stock exchange or clearing corporation of such other agency or person providing trading or clearing or settlement facility in respect of the security being conducted in a manner determinate to the interest or investor of security market to secure the proper management of any such stock exchange or clearing corporation or agency or person referred to the above. To any such stock exchange or clearing corporate or agency or person referred to above associations with the security market. To any company which security are listed or proposed to be listed in a recognized stock exchange as may be appropriate in the interest of investor in security and the security market. Power to adjudication section 21(1) and 23(j). SEBI shall appoint or any office not below the rank of division chief of SEBI to be adjudicating officer for holding an inquiry after giving any person concerned a reasonable opportunity to be heard for the purpose of imposing any penalty. While holding any inquiry, the adjudicating officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person accordant with the fact and circumstances to the case, to give evidence or to the produce of any document which may be useful for relevant to the subject matter of the inquiry. On such inquiry, if he is satisfied that the person has failed to comply with any of the provision, he may impose such penalty as if he thinks fit in the accordance with the provision of any section 23A to 23H, imposing penalty 23(1). With adjudicating the quantum of penalty, the adjudicating officer shall have due regard to the following factor, name the amount of gain or unfair advantage, the amount of loss caused to be investor or group of investor as a result of the default, any nature of defect. Section 23J, other power of SEBI with respect to stock exchange. The Security and Exchange Board of India 1992 prescribed the transfer of certain power which were earlier exercised by the central government under the Security Contract Regulation Act to Security and Exchange Board of India, according power in respect of the following with waste of SEBI under the SR. तो कौन कौन सी पावर और दी गई हैं ये देखिए. मिनट्स द फॉलोइंग बुक ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट में बी प्रिजर्व फॉर 5 years. Minute book of meeting of members, governing body and standing committee, register of member, register of authorized clerk and register of authorized assistant, record of security deposit, margin deposit books, ledger, journal, cash book, bank passbook. Section 6 of clause 3, security contract exchange board क्या चाहता है, call upon a recognized stock exchange or any other member thereof to furnish in writing such information to affair the stock exchange to the member of relation as may be required. तो ये सारी शक्तियों को बताता है कि ये काम से भी करेगा. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से रेगुलेशंस बना रहा है. अब अगर रेगुलेशन के बारे में देखा जाए तो पावर टू मेक रेगुलेशन सेक्शन 31 एज पर सेक्शन 31 विद प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 30 ऑफ द सिक्योरिटी and Exchange Board of India 1992. The Security and Exchange Board of India may be notification in the official gazette make regulation consistent with the provision of this act and the rule made thereunder the carry to out the purpose of this act. क्या क्या कर रहे हैं, पावर टू मेक रेगुलेशन कर रहे हैं. इसी में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द foregoing power, such regulation may provide for the manner in which at least 51% of equity share capital of recognized stock exchange is held within 12 months from the date of publication of the order under subsection 7 of section 4B by the public other than the shareholder having trading right under subsection 8 of the section. तो इस इम्पॉर्टेंट केस भी आर के अग्रवाल वर्सेस सेबी का इम्पॉर्टेंट केस है, आप पढ़ लेंगे. राम रख वर्सेस रोहन वर्सेस सेबी का इम्पॉर्टेंट केस है. पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 क्या क्या चीज़ें हैं. पावर ऑफ रिकग्नाइज एक्सचेंज टू मेक रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स. 7A में कहा गया है कि कब वोटिंग राइट वो होगा.
तो द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट टू मेंबर ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर प्लेस बिफोर द stock exchange of at any meeting, the regulation of voting right in respect of any matter placed before the stock exchange in any meeting so that each member be entitled to have only one vote, केवल एक वोट देने का अधिकार होगा. The restriction on the right of member to appoint another person as his proxy to attend the vote as to meeting of the stock exchange, such incident and supplementary matters as may be necessary to give effect to if any matter in clause A, B and C. तो पावर ऑफ एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बाय लॉज उपविधियाँ भी बना सकती हैं. कौन कौन सी उपविधियाँ बना सकती हैं? कुछ एग्जाम्पल्स: द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मार्केट एंड द रेगुलेशन ऑफ द आवर ऑफ ट्रेड, कि कब मार्केट खुलेगी, कब मार्केट बंद होगी, कितने घंटे मार्केट काम की जाएगी, इसके बारे में नियम बनाए जा सकते हैं. ए क्लियरिंग हाउस फॉर द periodical सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंट देयर अंडर द डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी, द पासिंग ऑफ डिलीवरी ऑर्डर एंड द रेगुलेशन एंड मेंटेन ऑफ द सच क्लियरिंग हाउस. The submission of the Security Exchange Board of India by clearing house as soon as may be after each periodical settlement of all any of the following particular as the Security and Exchange Board of India may from time to time require, namely the total number of each category of security carried over one settlement period to another, the total number of each category of security contract in respect of which have been squared up during the course of each settlement period, the total number of each category of security actually delivered at each clearing, the regulation of probation of burden or carry over facilities, the fixing, altering or postponing of days for settlement. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कुछ कि किन किन पे नियम बनाएंगे. तो द रेगुलेशन ऑफ business including the placing of limitation therefore, the levy and recovery of fees, finance and penalties, the regulation of the cost of business between parties to contract in any capacity, the fixing of scale of brokerage or other charges, the making, comparing, setting and closing to be margin, the emergencies in trade which may arise where as a result of pool or syndicates operation or concerning otherwise, the regulation of dealing by member of their own account, the separation of the function of jobber and broker, the limitation of the volume of trade done by any individual member in exceptional circumstances, the obligation of member to supply such information, explanation and to produce such documents relating to the business as the governing body may require. तो फाइन, एक्सप्लेनेशन फॉर मेंबरशिप, एनी अदर बाय लॉज. तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे. बहुत लंबा क्वेश्चन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो समरी में आप याद रख सकते हैं. आप सारी हेडिंग्स याद रखिए. पावर टू कॉल फॉर पीरियडिकल रिटर्न सेक्शन 6 याद रखिए. पावर टू डायरेक्ट रूल टू मेक रूल सेक्शन 8. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी और रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. पावर टू सस्पेंड बिजनेस सेक्शन 12. Power to prohibit contract in such cases section 16. Protection of action taken in good faith 29. Power of central government to grant immunity 23. Power to delegate का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना अपनी पावर को 29A. Power to make rule 30. Power of SEBI under Security Contract Regulation Act. Power to adjudicating निर्णय लेने का अधिकार. Other power of SEBI with respect to stock exchange. Power to make regulation section 31. Power of Stock Exchange in Security Contract Regulation Act 1956 7A. Power of Stock Exchange to make by law section 9. तो ये यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे डिस्कस हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपसे डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लर्न कर लेंगे. थैंक यू.